Hello everyone. Now we are going to start about the steel structure. Okay. Some of the RCC structure is almost completed. So if you are not watched my previous video, you can go through and watch complete Revit structure free of cost. आज से हम लोग स्टील का बारे में बताऊंगा. So now in this video I will show you how to create a steel column in Revit structure. Okay. Before that you have to draw the grids. Now I will set the unit UN as a shortcut key. Go with meters, change it into decimal 2, and unit symbol is meter. Okay, the unit is almost set. Now you have to draw the grids. You can see, just reference purpose I am drawing. Okay, so I'm using thick lines, so I'll give the offset as 4.5 meter. Select the grids. You will take the offset. That's enough, guys. It's only for practicing purpose. Again, draw the grids in vertical direction. Click here. Give the offset as 4.5 meter again. 1, 2, 3, 4, 5. Okay, I have drawn the grids here. You can see. Now we'll go with columns. Here it's option called column in structure bar. Select a column and you can see in properties bar the steel structure ISMB 100, ISMB 250, ISMB 300, Indian standard mild bars, ISMB 600. The स्टील साइज आप देख सकते हैं इधर ये सब स्टील स्ट्रक्चर है. ISMB 300 को मैं सेलेक्ट करता हूँ. तो सेलेक्ट करने के बाद इसमें देख सकते हैं इधर दो तीन ऑप्शन ऑलरेडी है. एट कॉलम्स, एट ग्रिड्स. टू सेलेक्ट द एट ग्रिड्स you have to select the grids. You have to select the grids. You can see all the columns are placed in at the grid center line. Finish. Okay, you can see it's finished. आप देख सकते हैं इधर ISMB सेक्शन ड्रॉ हो चुका है. Again go to 3D and check here. आप देख सकते हैं इधर ISMB सेक्शंस ड्रॉ हो चुका है. SD और सॉलिड तो आप देख सकते हैं ISMB सेक्शंस कॉलम्स ड्रॉ हो चुका है. स्टील का कॉलम्स देख सकते हैं इधर आपको आइडिया लग जाएगा स्टील का कॉलम है. ये ISMB सेक्शन है. तो इसी तरीके से आप लोग ड्रॉ कर सकते हैं. विदाउट selecting the grids you can draw. So again draw one more grid here and go to column, select one more ISMB sections, ISMB 600, and just I will place it here. You can see you can rotate also using spacer bar. You can see you can do like also. आप ऐसा भी करके ड्रॉ कर सकते हो. देख सकते हैं इधर. तो 3D में जाने के बाद आपको आइडिया लग जाएगा. देख सकते हैं ISMB 600 है. तो होप आपको समझ में आया होगा कि स्टील कॉलम कैसे ड्रॉ करते हैं या कैसे प्लेस करते हैं बोल के. इन नेक्स्ट वीडियो आई विल शो यू हाउ टू ड्रॉ द beams, steel structural beams. Okay, hope you understand, guys. Thank you for watching. Please subscribe my channel for more videos. I are complete Revit structure free of cost. Thank you so much.